Assalamu alaikum friends, hope you all are fine and enjoying your studies at home. You are listening to your chemistry teacher, Miss Hana Islam. Today we are going to study about chapter number 5, Physical States of Matter for 9th class, Federal Board, and our topic is question number 2, short answers. Okay? As review questions we have done in the previous lecture, which I have uploaded at the channel, YouTube channel. So some students were not present in our Zoom online lectures. That's why I am starting from the very next topic, that is our question number 2, short answer. Now our question number 1 is, so our first question is, explain why the volume decrease on increasing pressure on it at constant temperature. Beta, we have to explain why the gas volume decrease when we increase the pressure by keeping the temperature constant. So as you know, there is a large space between the molecules of the gas. When we increase the external pressure on the gas, the distance between the molecules will decrease, so that the volume of the gas will also decrease. बेटा ऐसे हो सकता है कि जब हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करें, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, सो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है इट विल डिक्रीज बिकॉज देयर इज़ अ लार्जर स्पेस. गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्जर स्पेस है एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द डिस्टेंस वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज. जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड? Yes, whenever there is a change in temperature, there is a change in vapor pressure. Okay, when we increase the vapor pressure of the liquid, the temperature will also increase, or we can say that when we increase the temperature, the vapor pressure will also increase. Why vapor pressure will also increase? Because the molecules will get more energy, more heat, they will get more kinetic energy, and the more molecules can escape from the liquid phase into the gaseous phase. इसको ऐसे समझें आप, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वेपर प्रेशर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा. क्यों इंक्रीज़ होगा? बिकॉज उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा होगी हायर टेम्परेचर पर. ठीक है. और the more molecules will escape from the upper surface, or we can say that from the liquid phase into the gaseous phase. more molecules जो हैं वो convert होंगे liquid phase से gaseous phase में. ठीक है. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, molecules will get kinetic energy, they will get more energy, and what happened? They will be able to convert, to go from liquid phase into the gaseous phase. Now third question is, water boils at 120 degree in pressure cooker. Why? आपको पता है pressure cooker will have a valve, एक rubber inside the cap of the pressure cooker which control the pressure inside the cooker. Okay, inside the pot. Okay, this valve generally exert a pressure of 2 atm. What will happen? इस रबड़ का काम क्या होता है? इट विल जनरेट द प्रेशर. ओके, हाउ मच? 2 atm. सो द valve does not allow water vapor to escape until the pressure inside the pot reaches 2 atm. ओके, सो क्या होगा? ये जो valve है इट विल जनरली एक्सर्ट, क्या करती है कि प्रेशर अप्लाई करती है 2 atm का. जब हम कैप दे देते हैं, हम लिड दे देते हैं इस पॉट को जिसे हम प्रेशर कुकर कह रहे हैं,
ठीक. So what will happen? Vapors will not escape into the outer surrounding, into the outer atmosphere. So what will happen? Until and unless the pressure inside the pressure cooker will reach 2 atm. When the temperature reaches at 120 degree, the pressure reaches up to 2 atm. So that's why water boils at 120 degree in a pressure cooker. अब बेटा आप इसे ऐसे समझें कि प्रेशर कुकर में जो वाल्व लगी होती है, जो रबर लगी होती है, वो खुद प्रेशर कुकर पर एक प्रेशर अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है, दैट इज़ ऑफ 2 atm. जब तक प्रेशर कुकर का अंदर का प्रेशर 2 atm ना हो जाए तब तक वाटर बॉयल नहीं होगा. और वाटर का जो 2 atm प्रेशर है, इट विल बी एट 120 डिग्रीज. ठीक है. When there is a temperature of 120 degree, there will be a pressure 2 atm and water boils. Okay. Now it's my favorite question is evaporation is a cooling process, and it's a very interesting and usually it comes in your paper. So please, it is a reasoning and very important topic for you and question for you, and underline it, mark it. So evaporation is a cooling process. ऐसे भी आपसे पूछा जाता है वाई एवोपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, आपसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में भी आपको दिया जा सकता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, द temperature is a measure of average kinetic energy of the molecules of the liquid. Okay. During evaporation, the escape of the high energy molecules from the surface of a liquid lowers the average kinetic energy of the remaining molecules, and therefore the temperature of the liquids falls down. Thus, evaporation is a cooling process. As you know, जब सरफेस मॉलिक्यूल्स escape होंगे into the atmosphere, they will take the energy from the lower molecules. Okay, they will lower the energy of the lower molecules. Okay, due to the lower in kinetic energy of the lower molecules, we will feel a sensation of coolness. That's why evaporation is the cooling process. Okay, evaporation is the cooling process. ऐसे समझें जैसे ही सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्कैप होंगे एटमॉस्फेयर में, क्या होगा कि वो अपने साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है हमारे मॉलिक्यूल्स की, दे विल टेक अवे विद दैम. सो इन द रिजल्ट व्हाट विल हैपन? द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी. Okay, low kinetic energy, so it means they have low temperature. When they have low temperature, it means there is a sensation of coolness. That's why evaporation is a cooling process.